I shall teach you in full this knowledge combined with realization, which being known, nothing more here remains to be known. Very unique statement. I shall teach you in full. We have never asked anybody to teach us in full. Our appetite is only this much, that partial knowledges have been given to us and we have got up eating that partial knowledge and remained as ignorant people. Here is a disciple of the caliber of Arjuna in the midst of Mahabharata war, the crisis of worst kind, and there is a dharma sankat, whether to kill his relatives or go by the worldly beliefs and allow adharma, the symbol being Duryodhana, to continue to promote adharma. That backdrop, Lord Krishna knows that now the appetite of Arjuna not be satisfied, satiated. Something less than full is given to him. He's a big warrior, archer. He has won in many battles. He is one of his own kind. There's nobody like Arjuna. And such a man, with all the preparations for war, is almost saying that I won't fight the war. Implications of it. How many soldiers, how many kings have left their kingdom and came in support of Arjuna? They're all standing behind him. And if he says, I don't fight, what are the implications? And Duryodhana continues to propagate his atrocities. But we all face this kind of dharma sankat. And therefore, there is a relevance. And Lord Krishna has already talked on so many subjects here in Bhagavad Gita, has tried to enlighten Arjuna. But he sees that he is not satisfied. What does this show? That to receive full knowledge, one should have a jigyasa. What is talked about jigyasa? Desire to know the truth. Jigyasa of a seeker. But let us take upon ourselves the liberty to talk on a subject like how to increase your jigyasa. How to take our jigyasa to a level that our jigyasa also is like that of a Arjuna, which would not be satisfied by anything less than knowledge in full. Full knowledge, complete knowledge, total knowledge. That kind of jigyasa. Like learning how to increase your appetite. There are so many medicines, there are so many advice in different systems, Ayurveda, allopathy, how to increase your appetite.
But here we are talking of a appetite for Brahma Gyan, that jigyasa. So we have to be quite aware that our jigyasa is it of a type that it wants full knowledge of Brahman, complete knowledge of God? We cannot cheat ourselves. We cannot pretend here. Nobody will forcefully give you a knowledge if you don't want knowledge. Person can bring food and keep it in front of you. Now the eating part has to be done by the person who says that he is hungry. Now let us see how hungry you are. Here is the food. Come on. The quantity of food that he takes will give us an idea how hungry he is. I've seen people with a plate and this mountain of rice eating. Or le aao, or le aao. I'm surprised that people can have that kind of appetite. And now, obviously, it's not just rice. There is a sambar, there is a curd, there is a vegetable, so many things. Or le aao, or. And they make like this. That picture, to me, I convert it to a equivalent to jigyasa. Like ordinary people will take only this much rice and this is not. But here is a man who eats a mountain of rice and he wants more. So outstanding appetite. That appetite for rice has to be converted to appetite to Brahman. So we should have a mountain of jigyasa. Extraordinary jigyasa. Because this man would take Brahma Gyan in full. He will settle for Brahma Gyan in full. Then only Lord Krishna will say, okay, I will give you Brahma Gyan in full. He has to first say that I want that. And it has to be a real demand. रेस्टोरेंट में जाते हैं चीजें मेनू कार्ड देख के ये ले आओ ये ले आओ ये ले आओ and then 1/3 of it, half of it is just leave it like that. What you order and what you eat, hardly would be any person वो पूरा उसको खाली करके प्लेट में से खाली करके पूरा लेके जाएगा. एक तो अच्छा नहीं लगता पूरा खाली करना, थोड़ा सा छोड़ना इज ए नॉर्मल. वेस्ट करना इज नॉर्मल. यहाँ तो ये है कि भगवान कहते पहले जो नॉलेज दिया पहले उसको तुमने संभाला, पूरा खाली किया, फिर और मिलेगा. और बार बार भगवान देखते हैं ये नॉलेज, ये पहले वाली नॉलेज का क्या कर रहा है ये साधक, उसको पूरा इस्तेमाल कर रहा है. ही इज सिंसियर, ही इज ट्राइंग टू प्रैक्टिस ऑल दैट हैज बीन टोल्ड टू हिम, एंड स्टिल देयर इज अ डिजायर फॉर गॉड. हमारी तो सिर्फ लाइब्रेरीज में हमने तो रखी हुई है नॉलेज को, इस्तेमाल करने की तो बात ही दूर है. कानों को कभी सुनने को नहीं मिलेगा मैं तुमको पूरी नॉलेज देता हूं. हमें खुद ही नहीं लगता कि हम कुछ भी कहीं भी we do many satsangs, we read so many scriptural texts, we never get a conviction कि हाँ आज शायद इस मंत्र से इस व्याख्या से मुझे पूरी नॉलेज मिल जाएगी.
क्यों? क्या इतने सारे स्क्रिप्चर्स ऐसे ही है? स्क्रिप्चर क्या हुआ जो ब्रह्म ज्ञान नहीं देता? तो हर स्क्रिप्चर तो ब्रह्म ज्ञान में कंप्लीट कंप्लीट है. एनी स्क्रिप्चर, एनी चैप्टर, एनी वर्स. Verses are very powerful. They are loaded with the force of the divine. The breath of the divine is, so to say, is in the implied meaning of the verses of the scriptures. हमें लेक्चर देना तो हम भी यही बात बोलेंगे. Scriptures versus other novels, literature. Scriptures are loaded with meaning. There is a spiritual force in it. We are very good at giving lectures because the audience, nobody gets up. Have you felt that force? Has that force entered you? Just show us. आजकल तो ऑडियंस कुछ भी बोल सकता है. आप हमें दिखाओ आपके अंदर क्या फोर्स आया. अब आप क्या दिखाओगे? स्टेज पे तो जुकाम लग रहा है, ऐसे ऐसे हो रही. It's just an example. One has to talk to oneself like this. तो इसलिए it presupposes a certain state of mind to receive knowledge in full combined with realization. कोई गैजेट खरीदते हैं, कई किस्म के सेल्समैन आते हैं. तो कोई तो जस्ट करके स्टार्ट करके कुछ पूछो, कहता मैनुअल पढ़ लेना, उसमें सब नहीं हो तो फिर हमारी वेबसाइट पे सब कुछ मिल जाएगा. वही करेगा, यूं करके थोड़ा सा करके स्टार्ट करा देगा, ठीक है एवरीथिंग, यहाँ साइन कर दीजिए, आई हैव रिसीव्ड इन गुड कंडीशन, चला जाएगा. पर कभी कभी कोई सेल्समैन आ जाता है ऐसा कि टीवी खरीदा नया, वो इंस्टॉल के लिए जब आया, इंस्टॉलेशन बैठ जाता है, अब आप चलाइए, अब ये प्रेस करिए, अब ये प्रेस करिए, अब ऐसे करिए, अब ऐसे करिए. फिर आदमी सोचता, फिर द परचेजर स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग, और क्या फंक्शन हो सकता है, और कैसे हो सकता है, अच्छा इसको ऐसे कैसे करना है, तो ये कैसे करना है, वो कैसे करना है. वो बैठा रहता है, फिर वो समझाता है, फिर वो समझाता है. और फाइनली कस्टमर को कहना पड़ता है, हाँ अब मैंने सब कुछ समझ लिया, अब आप जाना चाहें तो जा सकते हैं. ऐसा एक आता है इंस्टॉल करने वाला सर्विस का इंजीनियर. तो अब यहाँ भगवान कृष्ण आए अर्जुन के पास, कहता है बेटा मैं पूरा नॉलेज फुल भी दूंगा और उसको पूरा इंस्टॉल करूंगा, मैं चलाऊंगा, कि तू फुल नॉलेज को रिसीव करने वाले को जैसे बिहेव करना चाहिए तू वैसे बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो साथ ही खड़े, रथ में ही खड़े हैं, तो कोई कहीं जाने की तो बात ही नहीं है. दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन. फर्स्ट यू हैव ए नॉलेज इन फुल and then get converted into realization that it becomes part of you. Even a man himself cannot know that whether he has realized or not. It is Bhagwan only has to be there in the form of a guru that who knows that yes, now he has realized. मुझे क्या पता मेरे पैर के अंदर रियलाइजेशन आई है कि नहीं, अंगूठे के अंदर आई है कि नहीं, मेरे मुझे क्या पता. रात को हम सो जाते हैं, अब वो जो मैंने रियलाइजेशन जागृत अवस्था में ली, अब वो स्लीप अवस्था में वो रियलाइजेशन कहीं भाग तो नहीं जाएगी, कहीं इजेक्ट तो नहीं हो जाएगी, ये मुझे क्या पता. और अच्छा मैं सोऊं नहीं, बैठ के देखता हूं, नहीं ये भाग जाएगी, ये रियलाइजेशन भाग जाएगी, नहीं मैं अब मैं जागा करूंगा. दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ अ ब्रह्म ज्ञानी कि वो सोना ही बंद उसका. ब्रह्म ज्ञानी सोएगा, सोएगा तो उस रियलाइजेशन का क्या होगा जो उसने रिसीव की है.
So one cannot know whether one has realized or not. One can with great difficulty know that मैंने knowledge receive कर लिया शायद, हाँ पूरा संतोष हो गया, अब इसके आगे तो और कोई knowledge नहीं है, so मैंने full knowledge receive कर लिया. वो knowledge realization बनी है कि नहीं बनी है? कहने को बहुत simple लगता है, I have realized, but nobody can truthfully say that he has realized. Only Guru can say that he has realized. Means my disciple has realized. तो ये फर्क है दुनिया की नॉलेज में और ब्रह्म ज्ञान में, ये बिल्कुल अलग अलग है. बाकी नॉलेज में आदमी को खुद को ही पता लगता है कि मुझे नॉलेज है कि नहीं. ब्रह्म ज्ञान में खुद को नहीं पता होता कि मेरे को फुल नॉलेज है कि नहीं. That is why the scriptural statement, one who thinks he knows does not know. One who thinks he does not know knows. So he thinks he does not know, but Guru, he knows. अगर आपको कोई ब्रह्म ज्ञानी ढूंढना है तो ब्रह्म ज्ञानियों कोई नहीं बताएगा कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, उनके गुरुओं को ढूंढो. बताओ आपका कौन सा डिसाइपल ब्रह्म ज्ञानी है. गुरु कैसे ढूंढे? गुरु खुद ब्रह्म ज्ञानी है, उनके गुरु के पास जाओ. तो घूम फिर के बात सारी श्रद्धा के ऊपर आ जाती है. श्रद्धा, ये सारी चीजें, इट्स लाइक ए ग्लास, इट्स ए नाइट विजन ग्लास. नाइट विजन ग्लास डालो तो आपको रात को नजर आना शुरू हो जाता है. इंफ्रारेड कैमरा, पूरी पिच डार्क में आपको क्लियरली आदमी नजर आएगा. श्रद्धा वो ग्लास है, वो टेक्नोलॉजी है, आपको क्लियर दिखा देगी. जैसे सूरदास जी को नजर आ जाता था कि कृष्ण जी को कौन से वस्त्र पहनाए हैं, और पत्ते वाले वस्त्र पहनाए तो उनको नजर आ गया कि भगवान कृष्ण दरिद्र हो गए कि इनको पत्तों वाले वस्त्र पहनाने की नौबत आ गई है. फिजिकल आंखें नहीं थी, श्रद्धा के चक्षु थे उनके पास. एंड दीज आर रियल. सो all this refers to realization with full knowledge.